So आपको कहाँ से किया इन्होंने? So my office is on MM Alam Road. आप लाहौर से familiar होंगे. मैंने MM Alam Road शुरू से जब कुछ भी नहीं था, एक गुलबर्ग की गली थी. I've seen it, and today all your big franchises, all your main offices, everyone is there. And the thing about working is it's just part of you. You know you have to wake up at a certain time, like almost like a zombie. You go in the bathroom, you brush your teeth, you take a shower, you put your clothes on, you go. You're not nothing. You don't need a left. You don't need GPS. You don't need anything. You know where I have to go, what I have to do, and get to work. It's set routines. मेरे किडनैपर ने मुझे एक बात की थी. ये एक टीवी शो था पनिशर, उसमें भी वो उसको कहता है सिर्फ मैंने तुम्हारी रूटीन से रिमूव करना है और तुम ऐसे टूटोगे कि तुमने कभी सोचा भी नहीं था. You're a slave for this. You become slaves to these routines. And when I take you out, is तुम्हारी असलियत मैं निकालूंगा. I'll break you like you've never been broken. When you wake up every morning and you don't know the time and you don't have anywhere to go and anyone to speak to and no brush teeth and no wash shower and no office and no secretary, no friend, no love, no nothing in your life is black, is when I'll break you. So, he knew what he was doing as well. Anyways, सुबह 9:45 था. I go to office very early. And 10 बंदों ने मेरे पे हमला किया. Kalashnikovs jumped me. So आप like कहीं रास्ते में थे? बिल्कुल. मतलब ये मेरे ऑफिस की गली है. For example, ये main MM Alam है. I turned in. This is the main road. I went into the side lane and here's my office. So literally one street from my office. और कितनी गाड़ियाँ थी? So इनका काफ़ी meticulous. They planned it perfectly. मेरी एक गाड़ी थी, उसके सामने इन्होंने एक गाड़ी रोकी. और आप अकेले जा रहे थे? मैं सिक्योरिटी? I didn't have security. I was a bit silly at the time. So उस एक गाड़ी में फ्रंट में 2 ड्राइवर थे, 3 बंदे पीछे थे और मैं फ्लोर पे था. एक बंदा मेरी गाड़ी पे गया. That was the 6th guy. 7th was a spotter waiting from the entrance that like I told you, इधर से मैं एंटर हुआ था तो एक स्पॉटर इधर खड़ा था. This is हुसैन चौक. उधर एक स्पॉटर खड़ा हुआ था. When you go down the road, you go to cavalry वाला इशारा, उधर एक स्पॉटर खड़ा था. When you go over the bridge, मेरे घर की टर्न आती है, उधर एक स्पॉटर खड़ा हुआ था. So all in all, there were about 12 to 15 guys. At the spot, about 7-8. Right? एक गाड़ी, 2 गाड़ियाँ? एक गाड़ी में उस वक्त थे, बट एक चला गया मेरी गाड़ी की तरफ तो 6 बंदे या 5 बंदे मुझे ले गए. सही है. बट वन ऑफ देम वॉक टूवर्ड्स माई कार. अब मैं थोड़ा लालची इंसान था, मेरे पास अच्छी गाड़ी भी थी. मर्सिडीज़ की हार्ड टॉप कन्वर्टेबल मेरे अब्बू की थी. बट आई नेवर स्टॉप मी फ्रॉम शोइंग ऑफ. अनफॉर्चुनेटली दैट्स द कार दैट आई टुक टू वर्क दैट डे. My actual car wasn't working. For some reason, battery down होगी. So that had never happened to me before. So I left my guard. I left everyone, got into this car, drove. They jumped me and वो जो बंदा था उसको उन्होंने पूछा था कि तुम्हें मर्सिडीज़ चलानी आती है? उसने कहा मैंने चलाई है. मैंने 2001 का मॉडल चलाया था. जो अपना ही बंदा था उनका? जो उनका बंदा उज़्बेक था. ठीक है. इसमें पाकिस्तानी भी थे और उज़्बेक भी थे, बट ये उज़्बेक था ड्राइवर. ठीक है. मेरी गाड़ी 2008-2009 की मर्सिडीज़ थी, तो वो टेक्नोलॉजी बदल गई थी. आई नो अब तो वो स्टार्ट बटन और ये सारी चीज़ें बड़ी एडवांस हैं, बट उस वक्त इट वाज अ न्यू थिंग. और सिर्फ ये दोस कीलेस कार्स. तो मैंने वो चाबी साइड पे फेंकी, तो वो बंदे ने ट्राइंग टू फाइंड आउट हाउ टू स्टार्ट द कार स्टार्टेड हिज कन्फ्यूजन व्हाइल वन कार इज़ गॉन. तो उसने जिस स्पॉटर जो मैंने आपको बताया था टर्न पे खड़ा था, उसको फ़ोन किया. वो पाकिस्तानी था, उसका नाम उस्मान बसरा था. Usman Basra was an engineer from UET, University of Engineering in Lahore, big university. He arrived at the scene. उसने हेलमेट पहनी हुई थी और उसकी और इस बंदे की लड़ाई शुरू होगी कि यार तुमने क्लैशनकॉफ रखी हुई है, तो अभी तुमने गवर्नर ऑफ पंजाब का बेटा अगवा किया, तुम पागल तो नहीं हो गए? उस गन को फेंको. Usman Basra was a logical guy. So the Uzbeks started fighting with him, saying, मेरा पासपोर्ट है, literally. इन दिस आर्ग्यूमेंट उसकी हेलमेट मोटरसाइकिल पे था, उसकी हेलमेट से डिस्पोजेबल मोबाइल गिर गया एट द स्पॉट वेयर माई कार वाज. और इसने इस बंदे को बिठाया और ये आगे गया और इन्होंने आगे हुसैन चौक पे क्लैशनकॉफ फेंकी एंड ये वेलेंसिया की तरफ निकली. और गाड़ी आपकी वहीं खड़ी हुई है और फ़ोन वहाँ गिर गया. सो व्हेन द ISI arrived literally 20 minutes after my kidnapping, because मेरे ऑफिस से एक गली दूर थी. बट उनको भी 20 मिनट रिकवर्ड. बट उनको भी 20 मिनट लगे हैं. उनको भी. यू हैव टू अंडरस्टैंड, पहले तो मेरी किडनैपिंग हुई है, उसके बाद मेरी फैमिली और मेरे ऑफिस वालों को पता चला है क्या हुआ है.
उसके बाद उनको समझना था हम क्या करें. तो by the time they actually, the first person, as in my mother called my father's ex-military secretary, जो अभी उस वक्त जो current governor पंजाब थे, उनके military secretary थे. Now he also, like people, वो machine को शुरू करने में 20 मिनट is actually unbelievable. उस 20 मिनट की वजह से अगर 21 मिनट लगते, शायद कोई वो भिखारी या कोई भीख मांगने वाला गुजर रहा होता, कोई नशाई गुजर रहा होता, मोबाइल नजर आता, उठा के जेब में डाल के चला जाता. बट वो जब उधर पहुंचे, उन्होंने एरिया सील किया, उन्होंने वो मोबाइल देखा, उन्होंने उसको जियो फेंसिंग के लिए भेजा है, और उस एक मोबाइल से उन्होंने वो पूरा उनका नेटवर्क जो है, एंड दे अरेस्टेड 3 मेन गाइज द फर्स्ट डे. So whereas the first day on Friday by 6 o'clock they invested 3. I was picked up at 9:45 in the morning. By 6 o'clock in the evening 3 people were arrested. अगर मुझे कोई कभी लोग ISI और MI और हमारी इंटेलिजेंस और हमारी आर्मी को बहुत गालियाँ देते हैं, but that's because of सियासी involvement, right? You don't want them to be, or most people feel इनको knowledge नहीं है सियासी involvement में. But let me tell you, as far as what they are there for, they're the best. So आपको उन्होंने पिक किया, अपनी गाड़ी में बिठाया, और they injected me with ketamine का टीका and took me to Valencia, जहाँ मुझे continuously 3 दिन ड्रग रखा. और फजर के बाद फ्राइडे को हुआ किया, संडे फजर के बाद मुझे गाड़ी में बिठाया बुरके में, and they left for, and when I regained my consciousness and got my bearings right, I was in a place which I later discovered was Mir Ali. So फजर, मैंने वो रोज़े रमज़ान का वक्त था, तो इन्होंने, मेरा तो केटामीन का रोज़ा था, बट इनका जो था, इनकी ये तो अपने रोज़े खोल रहे थे. तो मैंने नोटिस किया था कि यार बेसिकली जहाँ भी मैं हूँ, फजर और मगरिब के बीच में पहुँच गया हूँ. आई थॉट इट वाज अफगानिस्तान, लकीली अभी मैं उधर नहीं पहुँचा. सो लेकिन जब आपको उन्होंने बिठाया, व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग यू लाइक इंटरैक्टेड विद देम? So it's crazy. The first thing I said to him was, यार मैंने तुम्हें वॉलेट भी दे दिया है, मैंने तुम्हें पैसे भी दे दिए हैं, गाड़ी भी आपके पास है, मुझे छोड़ दे, मैं आपको खुदा की कसम, मैं किसी पुलिस कुछ भी नहीं करूँगा, आपके पास 1 दिन है. तो वो लाइक ही वाज अ वेरी सिनिस्टर लुकिंग गाय. और ये वो पाकिस्तानी था? उज़्बेक, मोहम्मद अली. और किस लैंग्वेज में? उर्दू खालिस. कराची के मदरसे का पढ़ा हुआ था. मुझे ये टर्मिनोलॉजी कराची वाली सही नहीं समझ में आती क्योंकि असी तो लाहौरी हैं, मगर वो महाजिर कहते हैं, आई थिंक, जो लोग बांग्लादेश और इंडिया से आए थे, राइट? अच्छा, नहीं वो उनको कहते तो महाजिर है, मगर उनका जो उर्दू ज़ुबान के ऊपर कंट्रोल है बहुत साफ, बहुत, मैं कहता हूँ प्रॉब्ली द प्योरेस्ट एंड सबसे अच्छी वर्जन ऑफ उर्दू दैट आप सुन सकते हैं. सो आप बीच में बैठे हैं, साइड पे 2 बंदे? मैं पैरों के नीचे हूँ. ओके. तो ही टर्न टू मी एंड ही सेड, मैंने कहा यार आप जो लेना ले लें, मुझे छोड़ दें. तो कहते शहबाज, मैं तो आया ही तुम्हारे लिए. And what was your, like, what were you thinking? Did you realize actually कि it's Talibs या कोई वैसे? I thought it's a carjacking. I really did. I believed with all my heart कि ये carjacking है, तेरी अच्छी गाड़ी पकड़ी गई. कराची में हर वक्त ये होता है. मेरा एक कज़न था, उसके पास एक बड़ी मज़े की रेंज रोवर थी. वो आगाज़ नहीं है, सुपर स्टोर, उसके नीचे पुल में जा रहा था, 6 लोगों ने पकड़ा, मार के. द प्रॉब्लम wasn't that they stole the car, it's how badly they beat him that he had to be hospitalized. So मैं सोच रहा था, you know what, that's not a bad idea. I don't mind being getting beaten up as long as मुझे छोड़ दें. But when he said कि मैं तो आए तेरे लिए हूँ, तो this is not a carjacking, and the needle was going in my foreign उसी time. Yeah, it was going in my and arm. you're out. And I'm out. And I like within a minute? Seconds. Okay. Ketamine is a मतलब हाथी को अगर आप माने तो वो नम होकर गिर जाता है. So इंसान के blood के अंदर इंजेक्ट करना, it's like synthetic heroin. You know, it's a synthetic drug. It's manufactured in a lab. This is against big animals, yaar. Agar elephant is charging you and you shoot him with a ketamine dart, you'll stop the elephant, or a lion, you know, a hippopotamus. और ये लोग अंदर क्या बात कर रहे थे? Like the first 5 minutes. I couldn't understand. I just thought it was Pashto, but it turned out it's Uzbek. So I couldn't figure anything out for 6-7 months. What is the language that they speak? Because I don't know Pashto. Pashto and Chinese is the same for me, you know. बोलने का तरीका है, और वो लगते तो पठान ही है, थे उज़्बेक, थोड़े चाइनीज़ थे, पता नहीं ये क्या है यार. वी आर एलियन टू दिस. वी नो, लाइक योरसेल्फ, ओके, एंड यू वर्क इन मीडिया एंड यू डू अ पॉडकास्ट, आई कैन आस्क यू क्वेश्चंस, बट आप
कंफ्यूज हो जाएंगे, मुझे नहीं पता यार इनकी इंट्रिकेट वर्किंग है, मैंने इसका सुना है, इसका सुना है, इसका सुना है, इसका सुना है.